Dear students of 11th class, today is our topic of botany. It is glycolysis. Glycolysis, so far as we have read mostly, glycolysis it is a process or the breakdown of glucose to pyruvic acid is known as glycolysis. जो ग्लूकोज होता है उसको पायरुविक एसिड में ब्रेक होने को हम ग्लूकोलिसिस कहते हैं। तो इस तरह से ग्लूकोलिसिस हमारा आज का टॉपिक है और इसके स्टेप्स, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हमारा जो बॉटनी का टॉपिक है दैट इज़ ग्लूकोलिसिस। Glycolysis, it is a Greek word. Glycolysis, Greek means gluco means sugar, and lysis means splitting, and that is splitting of sugar. So far, this process is means splitting of sugar is a stepwise process by which one molecule of glucose breaks down into two molecules of pyruvic acid. तो वो प्रोसेस जिसमें एक ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है into two molecules of pyruvic acid, तो उस स्टेप को हम कहते हैं इट इज़ ग्लूकोलिसिस। ग्लूकोलिसिस ऊपर ग्लूकोलिसिस कंसर्न कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल की जिक्र करेंगे और वो ब्रेक होता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ pyruvic acid, तो उस स्टेप को हम कहते हैं इट इज़ ए ग्लूकोलिसिस। द स्कीम ऑफ ग्लूकोलिसिस वाज गिवन बाय Gesto M. Down, Otto Mirov, and G. Parnas, and is often referred as EMP pathway. So far as this process is concerned, it is also known as EMP pathway because it was discovered or given by three famous scientists. One is Gesto Emden, second is Otto Mirov, and third is G. Parnas. As these three scientists give this process of glycolysis, and it is also known as EMP pathway. So glycolysis is a Greek word. Glucose means sugar and lysis means breaking. The breakdown of glucose is known as glycolysis. It is common pathway in both aerobic and anaerobic mode of respiration, but in case of anaerobic organisms, it is only process of respiration. जो ये ग्लूकोलिस है ये एरोबिक और एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, इट इज़ कॉमन। जो एनारोबिक है इट इज़ द ओनली प्रोसेस, वहाँ पर सिर्फ यही ग्लूकोलिस होती है। ग्लूकोलिस अगर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ग्लूकोज गेट्स पार्शली ऑक्सीडाइज्ड। इस प्रोसेस में ग्लूकोज को क्या होता है, ग्लूकोज पार्शली ऑक्सीडाइज होता है इन प्लांट्स। द ग्लूकोज इज डेराइव्ड फ्रॉम द sucrose, which is the end product of photosynthesis, or from storage carbohydrates. During the course of process in plants, this course is first converted to glucose and fructose by the action of invertase enzyme. Invertase enzyme is utilized here, and this enzyme often these two monosaccharides enter the glucolytic pathway. So far as this pathway is concerned, in this case फर्स्ट कन्वर्टेड जो सक्रोस होता है फर्स्ट वो ग्लूकोज में चेंज होता है, एंड फ्रैक्टोस बाय एक्शन ऑफ इन्वर्टेस। तो ग्लूकोज से फ्रैक्टोस में जो ग्लूकोज चेंज होता है तो इससे एंजाइम इन्वर्टेस का रोल इसमें अहम है। तो इस तरह से टू मोनोसैकराइड्स एंटर द ग्लूकोलिटिक पाथवे। स्टेप्स, इसमें बहुत स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन ग्लूकोलिस चेन फॉलोइंग 10 बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, और हर एक जगह डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ होते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, फोटो फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स अंडर द एक्शन एंजाइम हेक्सोकाइनेस एंड मैग्नीशियम दैट गिव्स मैग्नीशियम आयन दैट गिव्स राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। तो जो इसमें होता है कि इसमें ग्लूकोज जो होता है वो चेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। इसमें यूटिलाइज होता है एटीपी और लास्टली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होता है तो बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। स्टेप नंबर सेकंड, so far as step number second is concerned, isomerization of phosphorylated glucose 6 phosphate takes place to form fructose 6 phosphate with the help of enzyme phosphokinase। तो जहाँ पर एंजाइम होता है फॉस्फो हेक्सोस आइसोमेरेस, फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेस रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होती है, आइसोमेरेस रिएक्शन होती है, वो जो फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो वो फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है।
तो इसमें एंजाइम जो होता है दैट इज़ फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज जो एंजाइम है वो यहाँ पर यूज़ होता है। तो स्टेप नंबर थर्ड इज दिस फ्रैक्टोज 6 phosphate again phosphorylated by ATP in order to form fructose 1,6 biphosphate in the present enzyme phosphorylate phosphofructokinase and magnesium. The step was phosphorylation of glucose. And the phosphorylation of glucose takes place in this process. In this presence of enzyme phosphofructokinase and magnesium ion, the step is a phosphorylation of glucose to fructose 1,6 biphosphate. That is from step 1 to step 3 activate the sugar, thus preventing it from getting out of the cell. तो जो स्टेप है इसमें एक्टिवेट शुगर का होता है तो इस तरह से सेल से बाहर नहीं जाता है। Step number 4 splitting of fructose 1,6 biphosphate takes place into two triose phosphates molecules, that is dihydroxyestone 3 phosphate and 3 phosphoglycerate. जो स्टेप नंबर 4 होता है इसमें दो स्टेप इसमें फॉर्म होते हैं। तो पहला होता है डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट होता है। दूसरा होता है इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज बाय एंजाइम एल्डोलेस। इसमें एंजाइम जो होता है वो एल्डोलेस यूज़ होता है। इस तरह स्टेप नंबर 5 डिहाइड्रोएस्टोन 3 phosphate and 3 phosphoglycerate or isomers of each other during glycolysis. All the dihydroestone 3 phosphate is converted to 3 phosphoglyceraldehyde by the enzyme triose phosphate isomerase. ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज इसमें यूज़ होता है। तो स्टेप नंबर 6 होता है ईच मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो होता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो होता है removes two redox equivalents in the form hydrogen atoms and transfer them to the molecules of NADP and accepts inorganic phosphate from phosphoric acid. This reaction leads to the conversion of phosphoglyceraldehyde to 1,3-phosphoglycerate reversible reaction. 1,3-biphosphoglycerate जो होता है तो इसमें चेंज होता है तो ये रिवर्सिबल हो सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो स्टेप नंबर 6 होता है 1,3-biphosphoglycerate is converted to 3-phosphoglycerate with the formation ATP. This reaction catalyzed by enzyme phosphoglycerate kinase. It is also known as energy yielding process. The formation of ATP directly from the metabolic constitutes substrate and level phosphorylation. That is also a reversible reaction. Step number 8 is concerned in the next step 3-phosphoglycerate is subsequently isomerized form 2-phosphoglycerate catalyzed by enzyme phosphoglyceromutase. That is, it is also reversible. It can be reversed. Step number 9 in the presence of enzyme enolase and magnesium ions with the loss of water molecules 2-phosphoglycerate is converted to phosphanol pyruvate. Reversible reaction. Step number 10 high energy phosphate groups of phosphanol pyruvate is transported a molecule of ADP by the action of enzyme pyruvate kinase in the presence of magnesium and potassium. Thus in turn produces two molecules of pyruvic acid molecule of ATP by substrate level phosphorylation. The pyruvic acid thus produced is the key product of in this reaction. The pyruvic acid is formed which is the end product of glycolysis. Dear students, it is sufficient. Thanks.